Welcome to all of you in this YouTube channel of GATE classes, which is a great initiative by the TEQIP faculties. Now, in this lecture, we will see solution and application of the Laplace equation. As of now, we already seen the Laplace equation, Poisson equation, Gauss law, and now there is a term which is a solution of Laplace equation which we have to see. So the title of today's class is Solution of Laplace equation. In the last class, we have derived the Laplace equation, and that was a second order differential equation with respect to three variable del square v is equals to 0. And the expansion of this particular equation was del square v by del x square plus del square v by del y square plus del square v by del z square, and this is equals to 0. This was the Laplace equation. Now let us consider a case in which we are having a parallel plate capacitor. Let us consider a case in which we have a parallel plate capacitor. Okay. Let's say this is the parallel plate capacitor. One plate is a positively polarized plate, another plate is a negatively polarized plate. Charge on the plate is, let's say, Q. The distance between the plate is, let's say, D. And the potential, let's say, bottom plate is having 0 potential and the upper plate is, let's say, V is equals to V naught potential. Area of the plate is, let's say, A. Okay. These things we have just assumed. Now you can say, suppose these plates are placed along the z-axis. So if I am saying this is z is equals to 0, this will be z is equals to D. Okay. So the plates of the parallel plate capacitor are placed over the z-axis. So I can say that the voltage is changing with respect to z coordinate only. And when I am saying voltage is changing with respect to z-axis only, it means this term does exist. There is no meaning of these two terms. Del 2v by del x square and del 2v by del square, del y square, इन दोनों टर्म को लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है. We will consider only one term, and that is del 2v by del z square is equals to 0 according to the condition. According to the condition which is given to us. Condition given लिख दे रहा हूं मैं. ठीक है. And now when del 2v by del z square is equals to 0, this is a second order differential equation with respect to one variable. Okay. This is a second order differential equation with respect to one variable. So the solution of the second order differential equation with respect to one variable is quite simple. Okay. So let us see. This equation is del 2v by del z square is equals to 0. Let us integrate on both the sides. When I integrate this, this will be del v by del z is equal to a constant. Let's say A. Then what I can write? I can write del v is equals to A del z. Now again I am integrating on both the sides. Integral of del v is nothing but v, and A del z का इंटीग्रल क्या हुआ z, and plus constant of integration, let's say v. So this is nothing but the equation of the voltage which we have determined. V is equals to Az plus b. Okay. And when I am saying v is equals to Az plus b, अब यहां पे हम बाउंड्री कंडीशंस की बात कर लेते हैं. बाउंड्री
conditions. ठीक है. What do you mean by boundary condition? Boundary condition is nothing but the condition at the boundary. Boundary condition is nothing but the condition at the boundary. So I can say that two conditions are given to us. क्या है देख सकते हैं पिछली स्लाइड में. Z is equals to 0, V is equals to 0, Z is equals to D, V is equals to V naught. Okay. When Z is equals to 0, V is equals to 0, and when Z is equals to D, V is equals to V naught. ये दोनों कंडीशन हम इस इक्वेशन में रखते हैं. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and let's say this is equation number 2. So if I substitute the value of V and Z in equation number 1 with the help of equation number 2, what I will get? V is equals to 0 when Z is equals to 0. इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो V बराबर क्या आ गया 0. दूसरी बाउंड्री कंडीशन यदि हम रखते हैं तो V इज इक्वल्स टू क्या है V नॉट, A इज अ कांस्टेंट और Z इज इक्वल्स टू क्या है D and V क्या है हमारा 0. So what is the value of A? A is nothing but V naught upon D. So now we are having two values. Let's say this is equation number 3 and let's say this is equation number 4. So we have the value of B and A from the equation number 3 and 4. Now I can substitute the value of A and B in the equation number 1. So this will be V is equals to A is nothing but V naught by D and Z is a constant and plus B is 0. So this is the equation which we have now. Okay, V is equals to V naught D by Z. Why? Because V is a scalar quantity. A scalar quantity. That's why unit vector is not there. Quantity. Okay, V is equals to V naught by D into Z. अगली स्लाइड में चलते हैं. हमारे पास आ चुका है V is equals to V naught by D into Z. ठीक है. And in the last class we have seen that electric field, definition of electric field is nothing but E is equals to minus of del V, and the expansion says minus del V by del X unit vector AX cap plus del V by del Y unit vector AY cap plus del V by del Z AZ cap. Okay, this is the definition of electric field, which is defined as the negative gradient of potential. So I can simply substitute the value of V in this equation. तो आप पाएंगे ये इक्वेशन अभी हमने डिराइव की. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ओके, एंड दिस इक्वेशन इज 5. ओके, this is equation number 5 and this is, let's say, equation number 6. So now I can substitute the value of V from equation number 5 into equation number 6. तो जब आप ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वोल्टेज है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फंक्शन किसका है ये? इट इज द फंक्शन ऑफ Z only. So when voltage is a function of Z only, there is no meaning of differentiate the voltage with respect to X or voltage with respect to Y. There is only meaningful del V by del Z. So I can better write this particular expression. E is equals to minus of del V by del Z AZ cap. Okay, so I can substitute the value of voltage here. E is equals to minus of del by del Z, और वोल्टेज की वैल्यू क्या रख दी हमने? V नॉट बाई D इंटू Z इंटू AZ कैप. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी आर गेटिंग? डिफरेंशियल किया हमने Z के रेस्पेक्ट में, सो द आंसर इज माइनस ऑफ V नॉट बाई D, Z का Z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 हो गया, इंटू AZ कैप. नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the parallel plates of a parallel plate capacitor. Let's say this is equation number 7. And let us assume a homogeneous dielectric material is filled between the parallel plates of a parallel plate capacitor, and that homogeneous dielectric material is having a permittivity epsilon. ठीक है, assumption ले रहा हूं मैं यहाँ. let us assume
homogeneous dielectric material of permittivity epsilon is filled between the plates. ठीक है, between the plates. Okay, let us assume that the homogeneous dielectric material of permittivity epsilon is filled between the plates. So अब हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है, E is equals to minus of V naught by D into AZ cap. Now this is the time when we have to describe what is electric flux density over the surface of the plate. ठीक है, whether it is a positively polarized plate or it is a negatively polarized plate. So D is equals to simply epsilon E और epsilon को मल्टीप्लाई किया, so minus epsilon V naught by D into AZ cap, because we know that E से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, E से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, एंड D क्या सिग्निफाई कर रहा है, D सिग्निफाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. Okay, so please keep in mind, do not confuse between these two terms. E is the electric field intensity and D is the electric flux density. So electric flux density आप कहेंगे नेगेटिव आएगी, नहीं, ये नेगेटिव भी होगी पॉजिटिव भी होगी, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिवली पोलराइज्ड है और एक प्लेट नेगेटिवली पोलराइज्ड है. और सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि हमें दिखानी है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज में दोनों तरह की पोलैरिटी होती है, प्लस माइनस. सो आई कैन से दैट surface charge density is plus minus D. So I can better write this expression plus minus को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस epsilon V naught by D into AZ cap. This is also a vector. What is rho s representing? Rho s is the surface charge density. Surface charge density. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट भी क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर इट इज. नाउ वी हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी. लेट अस टेक द मॉडुलस ऑफ दैट. ठीक है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ओनली. सो मैग्नीट्यूड यदि हम रो एस का ले लें, ठीक है, तो प्लस माइनस साइन दोनों से मुक्त हो जाएगा, एप्सिलॉन वी नॉट बाय डी, और यूनिट वेक्टर भी हट गया क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, 1 होता है. नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, इट इज सिंपली चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, लेट अस से द चार्ज ऑन द अपर प्लेट इज प्लस क्यू एंड चार्ज ऑन द लोअर प्लेट इज माइनस क्यू, बट अल्टीमेटली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ओवर द प्लेट इज क्यू and the area of the plate is A. So Q upon A is equals to epsilon V naught by D. If I write Q by V naught, what it will be? It is simply A epsilon by D. And do you remember in circuit theory, this is nothing but the capacitance. So we have derived the value of the parallel plate capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor with the help of Laplace equation, solution of the Laplace equation. Okay? And this is also application. Why it is the application? Because we know only voltage. With the help of voltage, what we have determined, electric field. How we have determined, E is equals to minus del V. Gradient किया पोटेंशियल का और फील्ड मिल गई. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मिल गई. Once we have electric flux density, the modulus, the magnitude of the electric flux density is nothing but the surface charge density. Once we have the surface charge density, it is simply charge per unit area, and with the help of charge per unit voltage, we can determine the capacitance. So देखिए ये एक proper link है, ठीक है.
इसे आप एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, वोल्टेज होगा हमारे पास, हम उससे फील्ड प्राप्त कर लेंगे, फील्ड हमें मिलेगी, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी प्राप्त कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, कैपेसिटेंस। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन मात्र से निकल सकती हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नन अदर देन द एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड हियर आई हैव डिराइव्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर द सिंप्लिसिटी, ठीक है। बट कैपेसिटर ऑफ अ कोएक्सियल cylindrical capacitor, capacitance of a spherical capacitor can also be determined by the solution of Laplace equation in other coordinate system, like if we take circular cylindrical coordinate, then we can determine the capacitance of a coaxial cylindrical capacitor. If we take a spherical coordinate system, then we can determine the capacitance of a spherical capacitor, ठीक है। तो वो सब चीजें भी डिराइव हो जाएंगी। It is only a play of coordinate system, and that's why in the very first lecture I have described you the fundamentals of coordinate systems, what is Cartesian coordinate, what is cylindrical, what is spherical coordinate, and how we can transform from one system to another system, okay। अब इसी के साथ दो टर्म और इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हमें देख लेना चाहिए। एक तो सोलेनोइडल एंड इररोटेशनल, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनोइडल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इररोटेशनल? सोलेनोइडल किसे कहते हैं और इररोटेशनल किसे कहते हैं? मतलब दोनों ही ये फील्ड है बेसिकली, सोलेनोइडल एंड इररोटेशनल फील्ड्स, ठीक है। Because we are studying electromagnetic field theory, so I can say that it is a type of field. Now solenoidal कब होगा? कोई वेक्टर, सपोज लेट अस से वेक्टर ए, ठीक है। तो सोलेनोइडल की कंडीशन है वेक्टर ए का डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए, ठीक है। यदि किसी वेक्टर का हमने डाइवर्जेंस निकाला और वो 0 आ गया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डाइवर्जेंस मींस डॉट प्रोडक्ट, and when you are finding the divergence it means the output is a scalar quantity। तो यदि किसी वेक्टर का हमने डाइवर्जेंस लिया और वो 0 आ रहा है, इट मींस दैट वेक्टर इज सोलेनोइडल, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं, ए इज सोलेनोइडल फील्ड। अब ये जो स्टेटमेंट हमने दिया डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू 0, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। अब मान लीजिए कि हमें सोलेनोइडल फील्ड को ही इंटीग्रल फॉर्म में बताना है, तो हमें क्या करना होगा? इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट अ सोलेनोइडल फील्ड इन इंटीग्रल फॉर्म, देन आई हैव टू यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है। As I already told you divergence theorem in the previous lecture, according to the divergence theorem, किसी भी वेक्टर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने वेक्टर ए लिया, इसका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल हमने लिया, और अब इसी वेक्टर के डाइवर्जेंस को हमने वॉल्यूम इंटीग्रेट किया, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द डाइवर्जेंस थ्योरम। According to the divergence theorem, closed surface integral of any vector field is equal to the volume integral of the divergence of the same vector field. लेकिन अभी आपने क्या प्रूफ किया कि डाइवर्जेंस 0 है, यानी डेल डॉट ए 0 है। इट मींस क्या 0 हो गया? ए डॉट डीएस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या हो गया? 0। तो ये रिजल्ट भी हमें किस तरफ पहुंचाएगा कि फील्ड कैसी है? सोलेनोइड। सो आई कैन से दैट इफ ए वेक्टर इज solenoidal, then या तो हम ये कहेंगे कि डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएस इज इक्वल्स टू 0।
तो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ये, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। दोनों बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि वो वेक्टर फील्ड हमारी सोलेनोइडल है। किस संदर्भ में? डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा। ठीक है, चूंकि डाइवर्जेंस थ्योरम किसी भी वेक्टर के डाइवर्जेंस के सरफेस इंटीग्रल को, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को उसी चूंकि डाइवर्जेंस थ्योरम किसी भी वेक्टर के क्लोज सरफेस इंटीग्रल को उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल से कोरिलेट करता है, इसलिए ये दोनों बातें सही हैं। यदि किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 हो गया तो भी वो सोलेनोइडल है, और यदि किसी वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रल 0 हो गया तो भी वो सोलेनोइडल फील्ड ही होगी। इज इट क्लियर? आइए हम देख लेते हैं इररोटेशनल फील्ड। इररोटेशनल फील्ड, ठीक है। So when we are saying that the field is irrotational, what does it mean? इसका मतलब है जो भी हमारा वेक्टर है उसका हम कर्ल लेंगे तो वो क्या आएगा? जीरो वेक्टर। जीरो नहीं लिखना है सर, बिकॉज जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हेन आई एम सेइंग जीरो वेक्टर, यू कैन आल्सो से दैट नल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट जो है वो तो हमेशा वेक्टर ही निकलेगा। दिस थिंग शुड बी क्लियर टू अस। सो व्हेन क्लोज सरफेस इन व्हेन वी can say that the curl of the vector field is zero vector or null vector, then I can say that the vector is a irrotational field। ठीक है, अब यहीं पे हम एक स्टोक्स थ्योरम का एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, किसी भी वेक्टर का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल उसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है, रिमेंबर व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम? अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम, किसी भी वेक्टर का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल उसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। दिस थ्योरम इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने वेक्टर कौन सा लिया है? ए, उसका हमने क्लोज लाइन इंटीग्रल किया और उसी वेक्टर के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल कर दिया। दोनों बातें बराबर हैं, मतलब स्टोक्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि इररोटेशनल फील्ड की कंडीशन क्या है कि वेक्टर का कर्ल 0 होना चाहिए, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होना चाहिए। तो यदि वेक्टर का कर्ल 0 वेक्टर या नल वेक्टर होना चाहिए, मतलब ये राइट हैंड साइड 0 हो गई। तो यानी यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे एनी फील्ड इज सेड टू बी इररोटेशनल इफ या तो उसका कर्ल 0 हो जाए यानी नल वेक्टर हो जाए, और उस वेक्टर का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जो है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को क्या हो जाए? 0। तो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है, देन वेक्टर इज सेड टू बी इररोटेशनल वेक्टर फील्ड, फील्ड इज सेड टू बी इररोटेशनल फील्ड। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। सपोज हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है कैपिटल A इज इक्वल्स टू YZ AX कैप प्लस ZX AY कैप plus XY AZ cap, and we have to prove that this is a solenoidal as well as irrotational। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर फील्ड हमारी सोलेनोइडल भी है, इररोटेशनल भी है। तो सबसे पहले सोलेनोइडल के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसका डाइवर्जेंस 0 होता है। अब डाइवर्जेंस 0 होता है वो तो तब प्रूफ होगा जब डाइवर्जेंस निकालेंगे, और डाइवर्जेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? ए के साथ डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट, और डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डेल बाय डेल एक्स ए एक्स कैप। इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, इट मींस ए डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। ठीक है, इस पूरे को ना लिख के सिर्फ सिग्मा लगा दिया, उसका वही मतलब है। डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है? वाई जेड ए एक्स कैप प्लस जेड एक्स ए वाई कैप प्लस एक्स वाई ए जेड कैप। तो आप पाएंगे जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए एक्स डॉट ए एक्स 1 होगा, ए वाई डॉट ए वाई 1 होगा, ए जेड डॉट ए जेड 1 होगा, और बाकी जितने भी डॉट प्रोडक्ट हैं वो सब 0 हो जाएंगे, बिकॉज
In mathematics, we already studied I dot j, j dot k dot I 0, but I dot I, j dot j, k dot k is 1. ओके, तो यहाँ आई जे के की जगह जो है वो ए एक्स ए वाई ए जेड ने ले ली, बाकी कुछ भी नहीं बदला। तो आइए देखिए, जब डेल बाय डेल एक्स इसका हम लेंगे, ठीक है, तो ये एक्सपांशन क्या बनेगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई जेड, एक्स डॉट एक्स वन, देन डेल बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किसका करना है, जेड एक्स। सिमिलरली जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल डेल बाय डेल जेड किसका करना है, एक्स वाई। और अब तो बिल्कुल क्लियर है, वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या है, जीरो, जेड एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, एक्स वाई का जेड के रिस्पेक्ट में जीरो, अल्टीमेटली द डाइवर्जेंस इज जीरो, एंड व्हेन द डाइवर्जेंस इज जीरो इट मींस दैट दिस वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल। ओके, नाउ इररोटेशनल प्रूफ करना है तो आप क्या निकालेंगे, इसका कर्ल निकालेंगे। और कर्ल लेना भी मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, इसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स, यहाँ पे लिखते हैं ए वाई, यहाँ पे लिखते हैं ए जेड, और ये हम लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और जो वेक्टर हमें गिवन है उसमें ए एक्स ए वाई और ए जेड की जो कोफिशिएंट है उसको तीसरे रो में लिख देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई जेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई। And when you expand this, I think everyone knows this thing. तो आप इसको expand कर सकते हैं। ax का कोफिशिएंट क्या आएगा, डेल बाय डेल y ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई को जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो x बचेगा, ठीक है। और सॉरी, मैंने ax के लिए निकालना है तो इसको लेंगे, हाँ x बचेगा, करेक्ट, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो x बचेगा। और माइनस माइनस आप क्या करेंगे, z के डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड एक्स, तो इसको भी करेंगे तो एक्स बचेगा, और इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, ए एक्स क्या, तो देखिए एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया। इसी तरह वाई का कोफिशिएंट भी जीरो आएगा, जेड का कोफिशिएंट भी जीरो आएगा, तो अल्टीमेटली इट इज अ जीरो वेक्टर। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज हैविंग जीरो डाइवर्जेंस एंड दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज हैविंग अ नल वेक्टर एज ए कर्ल। तो इसका कर्ल जो है वो नल वेक्टर है और इसका डाइवर्जेंस जो है वो स्केलर जीरो है। इसका मतलब ये इररोटेशनल फील्ड भी है और ये सोलेनोइडल फील्ड भी है, दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर। इज इट ओके? So I think I made it clear to you what is a solenoidal field and what is a irrotational field, and we have also seen that application of the Laplace equation, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। आइए एक बार क्विक लुक देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द Laplace equation, the Laplace equation was del square v is equals to 0. The expansion was del square v by del x square plus del 2v by del y square plus del 2v by del z square is equals to 0. And we have assumed a capacitor over here which is placed along the z axis. So the voltage is changing with respect to z only in this particular problem, and when voltage is changing with respect to z only, it means del 2b by del z square is the only term of our interest. Now it is a second order differential equation with respect to the one variable, so the solution can be very simple. Two times we did the integration over here, and we got the equation of the voltage, that is v is equals to az plus b. Then we have satisfied the boundary conditions which is given to us, which were given to us. Two boundary conditions are there. Z is equals to 0, voltage is 0, Z is equals to d, voltage v is equals to v naught. We have substituted these values and we have determined the voltage. Once we have the voltage, by taking the gradient of that voltage, we have determined the electric field intensity. Once we have the electric field intensity, we have just assumed that an homogeneous dielectric material of permittivity epsilon is filled between the plates of a parallel plate capacitor, and with the help of that information we have determined the electric flux density and of course surface charge density, because both are same quantity with the same units, only the representation is different. Once we have the surface charge density, which is simply defined as charge per unit area, we have determined the capacitance. So basically the learning from the Laplace equation and the solution of the Laplace equation is that we can determine electric field from the voltage, then we can determine electric flux density from electric field, we can determine surface charge density from electric flux density, and we can also derive the capacitance from the surface charge density. So all these things are interrelated to each other. The only thing is we should know the solution of the Laplace equation. And here I have given an example in which I have determined all these parameters for a parallel plate capacitor
but this is not enough. We can determine the all these parameters in cylindrical coordinates by taking an example of a coaxial cylindrical capacitor, and we can also determine all these parameters for a spherical capacitor by taking the spherical coordinate system. Okay, then we have seen that two very important terminologies in electromagnetic theory, one is solenoidal, another is a irrotational field. किस फील्ड को हम देखकर कहेंगे कि ये सोलेनॉइडल है और किसको देखकर हम कहेंगे कि ये रोटेशनल फील्ड, ठीक है, सॉरी इरोटेशनल फील्ड. तो उसके लिए कंडीशन क्या है, वेक्टर का यदि डायवर्जेंस जीरो है तो सोलेनॉइडल है, कर्ल जीरो है तो इरोटेशनल है. लेकिन वहीं पे डायवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का एप्लीकेशन हमने लगाया और उसके फलस्वरूप हमें ये मिलता है कि कोई वेक्टर हमारा सोलेनॉइडल तब होगा जब या तो उसका डाइवर्जेंस जीरो हो या उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल जीरो हो, और इसी प्रकार कोई वेक्टर इरोटेशनल कब होगा जब या तो उसका कर्ल जीरो हो या फिर उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल. ठीक है, सो दीज आर द लर्निंग्स फ्रॉम द टुडेज लेक्चर. आई होप आई मेड द कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Thank you very much. Thank you for joining us for this particular session.